Hello children, let us learn the chapter meal planning. This chapter is in home science curriculum for class 10, term 2 examination. So because your term 2 examination is approaching, so I thought that I should prepare a presentation or recording a video for you for this particular chapter. Again, this will come in sections or parts for you. और हर एक पार्ट के साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे for practice purpose because this particular exam is going to be a subjective exam. So I don't want you to fall apart. I don't want you to face any difficulty. और इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ में मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस मैं शेयर कर सकूं मैं वो करूंगी. So meal planning. What exactly is meal planning, children? Why is it important? So meal planning basically एक प्लान होता है जिसमें आपकी फूड आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है. That these are the food items that we are going to have in the morning, in between the meals, afternoon, evening or at night. And what we try to take care is कि उसमें adequate amount of right amount of nutrition होना चाहिए, right? So right amount of calcium, right amount of carbohydrates, right amount of proteins, सब कुछ right adequate quantity में होना चाहिए. ऐसे नहीं कि fats और oils ज़्यादा है, fruits और vegetables जिनसे हमें fiber मिलता है वो कम है. कैल्शियम एज इन जो प्रोटीन देते हैं आइटम्स वो बहुत ज़्यादा है एंड जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं वो बहुत कम है. सो मील प्लानिंग ऑल इन ऑल क्या होता है? इट इज अबाउट अ प्लान दैट हेल्प्स यू प्रिपेयर adequate nutrient plan for an individual or for the family. अब ये सब कैसे होता है? जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जिस तरह का मटेरियल आपके अराउंड आपको फूड आइटम्स मिलती हैं, रॉ मटेरियल मिलता है, उसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट होता है. सो मील प्लानिंग मीन्स टू प्लान फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स within the available resources. So all individuals are basically the members of a family. अब एक फैमिली में तो हर किसी की एज अलग होती है, जेंडर अलग होता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितना मिलना चाहिए किसको, वो एक मील प्लान करने से हम लोगों को एक क्लियर व्यू मिल जाता है. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग या व्हाट इज द रोल ऑफ मील प्लानिंग? मील प्लानिंग करने से हमें क्या फायदा होता है? सो सबसे पहला तो ये होता है कि आप उसमें कलर्स ऐड कर सकते हो अपनी मील में. तो जब आप प्लान करते हो तो आप उसमें कलर्स डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर सकते हो. एज इन इट कैन बी अ रेड ग्रेवी, अ वाइट ग्रेवी एंड अ ग्रीन ग्रेवी. दैट इज हाउ कलर एलिमेंट आप उसमें ऐड कर सकते हो. आप कलरफुल बना सकते हो बाय यूजिंग वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, समथिंग लाइक पेपर्स, मशरूम्स, जो आप कलर ऐड करते हैं आपके फूड में. नेक्स्ट इज टेस्ट. अब हर एक आइटम को आप टेस्ट वाइज भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके फ्लेवर के वाइज भी आप उसमें जो है वैरायटी ला सकते हैं व्हेन यू प्लान अ मील. एंड थर्डली इज द टेक्सचर कि उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए. नॉर्मली व्हाट वी ट्राई टू डू इज हम लोग जब एक मील बनाते हैं तो हम एक सॉलिड मील बनाते हैं और एक फ्लोई मील या फिर लिक्विड मील बनाते हैं या सेमी लिक्विड मील बनाते हैं. दैट इज हाउ हम टेक्सचर्स को ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं. So the importance of meal planning lies in the right choice and skillful blending of the ingredients, their colors, taste, flavor, and textures in a manner that is results in a nutritious and appealing meals. A nutritious and balanced meal, though important, may be disliked because of its poor presentation. So एक मील जो बैलेंस्ड है, न्यूट्रिशियस है, बट अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, वो देखने में नहीं अच्छी लग रही, तो कई बारी लोग उसको पसंद नहीं करते. इनफैक्ट वो उनको एक फील आता है कि नहीं इसको टेस्ट भी नहीं कर, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट द फूड दैट यू आर प्रिपेयरिंग उसको अच्छे से नाइसली आप उसको प्रेजेंट करो. Meal planning involves planning nutritious meals for all individuals in a family
keeping in mind their age, activity, likes, dislikes and food availability. So meal planning किस चीज को ध्यान में रख के बनाना है? ऑब्वियसली हमें एक न्यूट्रिशियस मील बनानी है सब लोगों के लिए। एक फैमिली में जो है जितने लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, 20 हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आपको उन सबको ध्यान में रख के बनाना है। आपको उन सब की एज, उन सब की एक्टिविटी, एज इन वो कितना फिजिकल वर्क करते हैं, कितना मूवमेंट है, किस कौन क्या चीज पसंद करता है, कौन किस चीज को पसंद नहीं करता, और फूड की अवेलेबिलिटी पे भी, एज इन आप कहाँ पे रहते हैं, वहां पे किस टाइप का फूड अवेलेबल है, उस पे भी डिपेंड करता है। Now let us move to importance of meal planning. Importance में children, you have around 8 points. So we are going to discuss one by one all the points. So the first one is it helps to plan nutritious meals. अब न्यूट्रिशन मील कैसे वो हेल्प करता है? आप जब मील प्लान करते हो तो आपको सारे फूड ग्रुप्स को एक मील में प्लेस करना है। एज इन उस मील में कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स भी होने चाहिए, और उसमें फैट्स भी होने चाहिए, पल्सेस भी होने चाहिए, एज इन सारे फूड ग्रुप्स उसके अंदर होने चाहिए। सेकेंडली, कि आप क्या मेथड फॉलो करते हैं जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स जो है उसके वो लॉस्ट नहीं हो जाए, एज इन न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो उसकी रिटेन कर सके। एंड लास्ट इज कि आप कैसे कंबाइन करें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स, जैसे स्प्राउटेड कॉम्बिनेशन, पफ्ड, पारबॉइल्ड, फर्मेंटेड फूड, आप कैसे इन सब डिफरेंट डिफरेंट जो फूड आइटम्स हैं उनको आप कंबाइन कर रहे हैं टू क्रिएट अ न्यूट्रिशियस मील। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू सेव न्यूट्रिएंट्स। अब क्या क्या चीजें हैं, बेसिकली आप कैसे फूड को हैंडल कर रहे हो, इट इज डिपेंडेंट ऑन that precisely, and it helps us save nutrients. कैसे कैसे हम सेव कर सकते हैं फूड में न्यूट्रिएंट्स? सबसे पहले आप वेजिटेबल्स को वॉश करिए कट करने से पहले। जब आप उसको अच्छे से वॉश कर देंगे कटिंग से पहले, सो देन यू आर एबल टू सेव इट्स न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज अब आप कटिंग के बाद में उसको वॉश नहीं करेंगे एंड आप उसको डायरेक्टली कुक करेंगे। नेक्स्ट इज पीलिंग वेजिटेबल्स थिनली, एज इन बहुत थिन उन जो है कट्स करके आप वेजिटेबल्स को पील करिए, एज इन नॉट थिक लेयर्स, बिकॉज जो पील होता है, एक जो कैरेट है या पोटैटो है उसका जो छिलका होता है बेसिकली पील होता है, उसके अराउंड सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अगर आप एक थिक लेयर में उसको पील करोगे तो आपने उसके न्यूट्रिएंट्स को तो हटा ही दिया। Many a times I see people, what they do is they take potato, सिर्फ उसको अच्छे से वॉश करते हैं, कट करते हैं, और वो उसकी वेजिटेबल बना देते हैं, उसको पील भी नहीं करते। बाय, बिकॉज उसको जो उसकी जो पील है, उसका जो छिलका है, उसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग मिनिमम वाटर, as in while cooking the vegetables, if you use lesser amount of water, you will be able to save the nutrients. Covering the food while cooking, why? Because जब आप कवर करते हैं तो उसी जो फूड आइटम है उसके मॉइस्चर से स्टीम होता है आपका वेजिटेबल, एंड देन इट गेट्स कुक्ड आल्सो इजीली। सो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इट डजंट गेट लॉस्ट। देयर इज रिटेनिंग स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज बेसिकली you take the leftovers of the vegetables, uncooked vegetables, and then you boil it in water. After boiling in water, strain this water and keep this water in refrigerator. You can store it for 3 to 5 days, and you can use this stock for making vegetables, dals, that is pulses. You can even use it for doing the for kneading the dough, and you can also use this particular stock for preparing things like Maggi. तो उसमें जो पानी आप यूज करते हो उसकी जगह आप ये स्टॉक यूज करो, and you will be able to prepare a very good tasty Maggi out of it. Next is it helps in introducing flexibility. अब जब प्लान कर लेते हैं हम मील, तो हमें पता है हमारे घर में कौन कौन लोग रहते हैं, उनकी क्या एज है, किसकी कितनी एक्टिविटी है, किसका क्या हेल्थ स्टेटस है, एज इन उसको क्या हेल्थ डिजीज है,
क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसके लिए मुझे क्या न्यूट्रिएंट उसको देना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए. सो द एज, एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस एंड प्रेफरेंस ऑफ ईच फैमिली मेंबर आर डिफरेंट. सो आप एक मील बना रहे हैं जो सबको सेटिस्फाई करे, and it gives the right amount of or the kind of nutrients to everyone but one in the family. The meals planned should be such that one is able to adapt themselves according to the nutritional needs of individual family members. So I have an example over here. A common meal for the entire family could be a moong dal, rice, curd, cucumber, and a carrot salad. अब जब ये बनाते हैं तो इसमें आपको सारे के सारे फूड ग्रुप्स मिल जाते हैं. आपको मूंग दाल मिल गई जो पल्सेस की कैटेगरी में आती है, राइस मिल गए जो सीरियल्स की कैटेगरी में आते हैं, कर्ड मिल गई जो आपकी एग, मिल्क, मीट, फिश, पोल्ट्री की कैटेगरी में आती है, क्यूकम्बर एंड एंड कैरेट सैलेड ये बेसिकली आपके दोनों आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में. नाउ व्हेन यू प्रिपेयर राइस तो आप जीरा राइस बनाते हैं. सो यू बेसिकली यूज ऑयल फॉर फ्राइंग और फॉर क्रैकलिंग दी जीरा, राइट. सो देन अगेन फैट्स एंड ऑयल्स भी उसमें यूज हो गए. दाल को तड़का लगाया, अगेन यू आर यूजिंग ऑयल फॉर दैट पर्पस. सो यू हैव ऑल द food groups included in this one particular meal, and it is good for all age groups. Any member suffering from an upset stomach can be given khichdi with plain curd. Now, in case somebody has, stomach problem, then in that case, it is advised that you give them a very light meal. So, in that particular case, a khichdi or a dal rice can be given to that person with plain curd. तो आपको ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा मील में, आपने ऑलरेडी बनाया है वो, और आपको बस कुछ चीजें उसमें से हटानी है, जैसे क्यूकम्बर हटा दिया एंड कैरेट सैलेड हटा दिया. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर गिविंग इट टू दिस पर्सन. One should also be able to modify the meals so that items can be packed for tiffins and remain appetizing even when eaten cold. So now what you can do is आपने इसी मील को मॉडिफाई भी करना है, अगर किसी को पैक करके देना है so that this person can take it for to his or her workplace. So then in that particular case you should be ready to modify it as well. So it can be that instead of giving a carrot salad, you can make a pulao with the vegetables and mix it with rice. That is how you need to be open to a bit amount of flexibility also. Now, meal planning helps to prepare low-cost meals and reuse leftovers. हम लोग इंडियंस हैं और हम लोगों को एक हैबिट होती है कि कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज अ वेरी गुड हैबिट. अगर आप और जगह पे देखोगे तो यू वुड फाइंड दैट पीपल मेनी टाइम्स डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू सच थिंग्स, बट हियर वी गिव टू मच ऑफ एन इम्पोर्टेंस. तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट को समझना इतना मुश्किल नहीं होगा. सबसे पहले लो कॉस्ट मील बनाने के लिए what we have to take care is that we need to go for seasonal foods or cheaper substitutes. तो seasonal foods या fruits आप लेंगे, vegetables लेंगे तो वो हमेशा सस्ती होते हैं in comparison to the non-seasonal ones. In the same manner, आप कुछ substitutes ले लो of the original or the main food or the food item. So then again, वो expensive नहीं, वो cheap meal में आ जाता है, and you are able to get the right kind of nutrients out of it. So an example is a handful of peanuts or soybean. अब एक fistful of peanuts या फिर सोयाबीन आपने लिया अगर, तो वो आप almonds की जगह यूज कर सकते हो. तो almonds हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, तो आप peanuts ले सकते हो या फिर सोयाबीन ले सकते हो. वो आपको सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देंगे. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट इज सिसेम सीड्स. तिल की जो सीड्स होते हैं ना, सिसेम सीड्स जो है वो मिल्क के सब्स्टिट्यूट की तरह आप यूज कर सकते हैं. तो उससे उसमें भी बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक टू गिव यू अनदर एग्जांपल हियर, दैट इज papaya. Papaya is also rich in calcium. So again, you can have calcium in papaya, and the right amount of calcium will your body will extract from there. Next is leftover food. हमारे घर में अगेन हम लोगों को हैबिट होती है कि लेफ्टओवर फूड को रीयूज करना, एज इन थोड़ी सी सब्जी बच गई है तो उसको पुलाव में डाल दिया,
So you are not throwing the vegetable, you're utilizing it, and that's the nicest thing. Or maybe चिड़वास बना दिए, उसके उपमा बना दिया जिसमें वो vegetables डाली. In the same manner, another example is leftover rice. अब राइस कई बार बच जाती है, एग्जैक्ट अमाउंट में तो कभी नहीं बन पाती. सो अगर थोड़ी सी बच गई तो आप उसको रीयूज कर सकते हो. कैसे? राइस पुडिंग बना सकते हो, जैसे खीर बनाई तो खीर के जैसे आप उसको बना सकते हो. देन इज कटलेट्स, राइस कटलेट्स बना के आप यूज कर सकते हैं. Thirdly is lemon rice. This is another example of using leftover rice. I would like to give another example to you people, and that is dal. हम लोग के घरों में दाल बच जाती है. So what we do? हम लोग उस दाल को का आटा बना लेते हैं, भून लेते हैं और हम उसके पराठे बना लेते हैं दाल के. या फिर आप उस दाल को कचौड़ी में फिलिंग के लिए यूज कर सकते हो. ड्राई करके दाल को एंड यू कैन यूज इट फॉर फिलिंग ऑफ द कचौड़ी. सो यू आर नॉट वेस्टिंग इट, बट यू आर यूटिलाइजिंग द लेफ्ट ओवर फूड to the max possible. Then is it helps to save time, energy or fuel. या फिर हम इसको कह सकते हैं it helps to save resources, because time, energy और fuel आपके resources हैं. All the ingredients can be bought together from the market if meals are planned. So एक ही बारे में आप मार्केट में जाके आपको जो जो चीजें चाहिए आप पेपर पे लिख के लेके जाइए और वो उनको आप एक ही बारी ले आइए. सेकेंड इज आपकी एनर्जी और टाइम किससे और बचता है, दैट इज प्री प्रेपरेशंस. कोई भी चीज बनानी है उससे पहले उसको पील करके, चॉप करके, शेल करके आप रख लो पहले. तो उससे क्या होता है, जब पीक टाइम होता है आपका काम का, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बनाना है, बॉक्स टिफिन भी पैक करने हैं, सो दैट पॉइंट इन टाइम व्हाट हैपेंस इज प्री प्रेपरेशंस हेल्प करती है. लाइक इफ आई हैव टू प्रिपेयर आलू बीन्स, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं बीन्स को पहले ही चॉप करके रख सकती हूँ, एंड देन आई कैन फ्रेशली चॉप द पोटैटो, एंड देन आई कैन मिक्स देम टुगेदर एंड प्रिपेयर द वेजिटेबल. सो मेरा टाइम सेव हो जाता है. Then is dovetailing or dovetailing. Now, in this particular case, what we do is कुछ चीजों का जो है ना एक ही टास्क है. जैसे हमारे घर में मसाला बहुत ज्यादा हर एक चीज में डलता है. सो व्हाट वी डू इज हम मसाला पहले इकट्ठा बना लेते हैं फॉर अ फ्यू डेज, एंड देन वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर मसाला एज एंड व्हेन नीडेड. Then is soaking dals the night before or collecting required ingredients near the gas and using pressure cooker. So you soak the dal, कल बनाना है, आज रात को सोक कर दिया, so then वो फटाफट कुक हो जाएगा, तो आपका फ्यूल भी कम लग रहा है. So they are all possible when the meals are planned by us. Next is it helps to give a feeling of fullness and satisfaction. Why? Because आप सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें डाल रहे हैं, आपकी बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए आप वो सब उसमें डाल रहे हैं. So protein and fat rich foods have high satiety value, hence a person does not feel hungry for quite some time after consuming such foods. So because उसमें high satisfaction मिलता है आपको, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है अच्छे से. So that is why it is advised to take a proper meal that provides fullness and satisfaction to you as well as your body. It helps to make food attractive and appealing. Um, when we talk about colors, textures, when we talk about garnishing, when we talk about slicing the food in different or cutting it into different shapes, garnishing is it with different things like coconut sometime, or the other time with coriander leaves, or maybe with parsley leaves. So then it makes your food look attractive too. Helps to incorporate variety. Now, what one can do is one can sometimes go for variety of textures. जैसे कभी आप उसको स्टीम कर लो वेजिटेबल्स को और फिर आप उसको कुक करो, कभी आप उनको बॉईल करके कुक करो, कभी आप उनको स्ट्यू कर लो जिससे कि उसका बहुत एक सॉफ्ट सा टेक्सचर आ जाए. सो एनी ऑफ द type can actually be opted for, or we can even go for frying and baking too. You can also change the spices or the number of or the amount of spices and condiments, and they would also help change the texture as well as the taste of the food item. Now I have a few set of questions for your practice.
Let us just go through them. The first question is, if you have good knowledge of using leftover foods, you can plan a balanced meal for the family. Elaborate with the help of two examples. So leftover food के कोई भी दो examples आपने यहाँ पे explain करने हैं. So I have these two examples here. One is for rice, another one is for dal that I have given. And how you can further modify. So try and take care that you write the complete answer mentioning the points because they've asked for two examples. So one is the leftover rice and then further आप उसको कैसे use कर सकते हो. Second is leftover dal and then how it can be used for preparation of meals. Next question is define the term meal planning and give two reasons for meal planning. अब meal planning की definition लिखनी है. There are two sets of definitions that are given. One is meal planning means to plan for adequate nutrition for all individuals within the available resources. And the second definition is meal planning involves planning nutritious meals for all individuals in a family, keeping in mind their age, activity, likes, dislikes, and food availability. And now, what are the reasons for meal planning? So, reasons for meal planning, आपकी basically importance of meal planning आ जाएगा या फिर role of meal planning आ जाएगा, and these first 5 points are very important in that particular case, and that is it helps to plan nutritious meals, it helps to save nutrients. तो आप इसीलिए प्लान करते हैं जिससे कि आप अल्टीमेटली अपना टाइम सेव कर सको, आप फ्लेक्सिबल रहो, आप लो कॉस्ट मील बना सको, और आपने प्लान किया है तो ऑफ कोर्स आप लेफ्ट ओवर फूड को भी रीयूज कर सकते हो. आप मील प्लानिंग इसलिए भी करते हो जिससे कि आप टाइम सेव कर सको, एनर्जी और फ्यूल को भी सेव कर सको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन. One is meal planning help to save nutrients. Two, meal planning help to save resources. And the third one is meal planning help to reuse leftovers. Now, I leave this question on you to answer because we have already discussed this in the presentation. But it's still, in case you have any problem, you can always reach up to me. My email address is given on the slides. So children, thanks for watching. And yes, this is part 1 of meal planning chapter of grade 10. Soon I will be posting part 2 of this chapter that will have the factors of meal planning or factors affecting meal planning for you. Thanks for watching.